Hello, aspirants. Hi. Hello from EduChemy. Good evening. I hope पेपर चेक करना चालू कर दिया होगा आप लोगों ने एंड I just came here for 5 to 10 minutes just to give you a brief kind of my opinion about CSAT paper. And what we will do is we'll look into the section wise distribution of questions and quants में topic wise what is the distribution of question and the difficulty level as well, right? We'll also briefly go through the paper once. We'll look at a few questions to gauge the difficulty level and how could we have approached the paper. Okay, and maybe the overall solution or question by question solution will come later. Okay, so let's start. तो इस बार what UPSC has done is the section wise distribution is almost equal. So reading comprehension के 29 questions थे, reasoning के 23, quants के 28. Of course there are a few overlaps. कोई sequence को reasoning में डालता है, कोई quants में डालता है, so that is perfectly fine, but almost it is an equal distribution. And the best part is रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सबके लिए, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग से हो या फिर ह्यूमैनिटीज से हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिस टाइम वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट. मोस्टली इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आपका रीडिंग हैबिट है, आप न्यूज़पेपर्स लगातार पढ़ते रहे हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, सो इट वुड हैव बीन काइंड ऑफ इजी थिंग. इफ योर एक्यूरेसी इज गुड तो यू कैन सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 29 क्वेश्चन है, लेट्स से 80% एक्यूरेसी है किसी का, तो 24 क्वेश्चन यहाँ से आ गए आपके. आपको 3 या 4 क्वेश्चन और चाहिए सीसैट क्रैक करने के लिए. लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि हमको 200 मार्क्स स्कोर करना है तो या फिर 150 करना है. दैट इज नॉट द पर्पज, राइट? हमको सीसैट जस्ट क्वालिफाई करना है टू गेट इनटू काइंड ऑफ टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, राइट? देन द जीएस गेम्स स्टार्ट्स. रीजनिंग में रीजनिंग वाज ओके, तो यू कैन से इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट बिकॉज देयर वर फ्यू प्लेसेस जहां पे यूपीएससी आपको एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको कुछ कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स याद हों, कुछ कुछ सीक्वेंस याद हों, एंड इट वाज नॉट अ वेरी kind of easy reasoning paper, I would say. Of course for engineering and science background it is okay. क्वांट्स में मैंने डिफिकल्ट मार्क किया है. दिस इज स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज पीपल, ठीक है? एंड इवन व्हेन आई से इंजीनियरिंग एंड साइंस, ऑफ कोर्स जिनका क्वांट्स अच्छा है उनके लिए मे बी इट वाज इजी, बट इट वाज नॉट दैट इजी. ओके, देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, एंड इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, दैट इज अ ट्रैप. You waste a lot of time and that is the trick, right? यूपीएससी में कि आपको 40-50 आसान क्वेश्चन कैसे पिक करते हो. आप जीएस पेपर दे चुके हो पहला, फिर आप 2 घंटे के ब्रेक के बाद सीसैट पेपर में घुसते हो, और अगर क्वांट्स के किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप अटकते हो तो जनरली इफ यू हैव नॉट practiced enough, you are not calm and relaxed. By the way, being calm and relaxed is the greatest advantage anyone can have in CSAT paper. तो यहाँ पे उस कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको जस्ट आपको स्किप कर देना था, आपको सॉल्व करने जाना ही नहीं था. अगर आपने इस माइंडसेट से अप्रोच किया है पेपर को तो इट वुड हैव बीन इट वाज एन इजी पेपर, आई वुड से. बट जीएस पेपर 1 के बाद जनरली वो माइंडसेट नहीं रहता है. आपने वो 100 क्वेश्चन लगाए हैं एंड जीएस पेपर वाज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड सो वो जो माइंडसेट जो जिस स्टेट में आप सीसैट पेपर देते हो उसके हिसाब से दिस वाज डिफिकल्ट क्वांट पेपर. टॉपिक वाइज अगर अब की बार आप देखोगे तो नंबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे इन्होंने. इनफैक्ट मैक्सिमम इन लास्ट 5 years 17. वैसे ये ट्रेंड रहा है कि नंबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं. तो अगर आपको लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, वन एरिया दैट यू शुड फोकस इज नंबर्स. नंबर्स में क्या है,
real numbers, natural numbers, prime numbers, understanding of the kind of numbers and the overall number line पे कैसे define करते हैं, that is one. Divisibility rules, unit digit निकालना, LCM HCF. So इस बार यूपीएससी ने नंबर्स वाले सेक्शन पे ओवर इंडेक्स करा है, आई वुड से. More questions were from numbers, and then from a few questions were from averages, percentages. There was not any question from linear equation, I would say, and compound interest से कुछ नहीं था, एक mensuration से था. टाइम एंड डिस्टेंस और वर्क टाइम से दो क्वेश्चंस थे. इनफैक्ट एक पाइप्स एंड सिस्टम्स वाला क्वेश्चन होता है जिसको हम वर्क एंड टाइम वाले कॉन्सेप्ट से लगाते हैं. तो दिस वाज अ काइंड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ सेक्शनल एनालिसिस एंड क्वांट का टॉपिक वाइज एनालिसिस. लेट्स हैव अ लुक ब्रीफली एट द पेपर, राइट? सो इफ यू see, so let's go from start. Okay, so if you look at this passage, it is not a coincidence that I have opened the first question, but generally all the paragraphs are like this, so the conflict between conservation of biodiversity and commercial exploitation पे पैसेज है. आप इसको ढंग से रीड करेंगे, you will definitely be able to write both the questions correctly. There is no trick, straightforward questions. Same goes for second. Renewable energy को अगर स्केल करना है किसी कंट्री में, इंडस्ट्री वाइज, कमर्शियली, how you can scale and the how it is an added advantage अगर आप पहले से start करते हो, and how when you scale it economically, how the cost goes down. सोलर एनर्जी का एग्जांपल लिया गया है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब देयर इज नो चांस दैट इफ यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज you can mark any of these questions incorrectly. Now comes, and this is the overall pattern as well. 4 questions RC के दिए, 3-4 questions क्वांट के, फिर RC, फिर क्वांट, फिर ऐसे करके लास्ट में रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं. These are the 2 questions which are not straightforward and will need some time to solve this question. You need some time to solve these questions. But at the same time, if you are stuck here, that is the game. You will also find that this is a difficult one. This is not a difficult question. This is an easy one. So this is what happens. You have to just mark it and move forward. कि अगर आपसे पहली बार में ये लग रहा है कि नहीं, ये इमीडिएटली मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ सॉल्व करना, मेरे को सोचना पड़ेगा इस पे कि कैसे सॉल्व करना है, जस्ट स्किप इट, मूव फॉरवर्ड. आपको सबसे पहले तो 80 के 80 क्वेश्चन देख लेने हैं. अगर 50 क्वेश्चन का आप माइंड मेकअप करके आए हो कि इतने क्वेश्चन करने बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी, यू जस्ट ट्राई टू लुक एट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर टिल क्वेश्चन नंबर 80 बिफोर गेटिंग स्टक टू एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन. दैट इज द ट्रिक. तो दिस वाज एन इजी वन. Similarly, this is the reasoning question. So if you look at it, it is an easy one. So you just have a look at it. January से January, so 0, there is no deduction, then 1, then -2, then -3, then -4. So solutions I'll provide in some time, maybe in a day or 2, but these were doable questions. This is one tricky one, क्वांट का जो क्वेश्चन है. सो अगर आप ये नंबर देखते हैं, सो एवरेजेस का क्वेश्चन है, तो एनीबडी जो सीधा नंबर्स रिजल्ट से बैकवर्ड सॉल्व करता है विल फाइंड कि 72 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है. आपको लगेगा ये सही है, बट ये है नहीं, बिकॉज इट सेटिस्फाइज फॉर ऑल 3. इट विल सेटिस्फाई फॉर एनी नंबर. And that's where it gets tricky.
सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सीसेट का पेपर थोड़ा क्वांट का पेपर जो है ट्रिकी था, ठीक है। ये आपको इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है, इजी है बट इट विल टेक सम टाइम। ओके, सिमिलरली लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, राइट। if 5 है, you know what will be the answer, right? Similarly, here you just have to take a few numbers between 1 to 20 and see how many such numbers are possible, and then we'll find out, you will find out, right? So same goes for here. If you put 1 by 2 you will get the answer, ठीक है। यहाँ पे आप रखते हो तो आपको टू नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस है, तो 111 कर लो, 515 कर लो, 9 19 10 20, ये सारे केसेस में आप देख लो कितने नंबर्स मिल रहे हैं जो 5 से डिविजिबल है। सो यू विल फाइंड इन फ्यू केसेस इट इज 1, इन फ्यू केसेस इन 2, सो द आंसर वुड बी C, right? So we are going to look at the answer of individual questions. I'll share the solution, but till then, you know, prelims is over. Take rest. Maybe I don't know, party tonight. But start checking papers from tomorrow. All the best. Thank you.